Hello, assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everyone. In our last part 1 and part 2, we discuss about the different types of animals. We also discuss about the purple frog, who is endangered, and most of the we find in northern east, जो ज़्यादा हमारे आसपास में वो नहीं दिखाई देते. So in the last part 1 and part 2, we discuss about the activity 1 to 6. Okay, so today we start the new activity 7. So here in activity 7 discuss about के dinosaur are extinct, means who are left away to the world, यानी कि जो लुप्त हो चुका है वो अब दुनिया में है ही नहीं. It's called extinct. The purple frog is endangered. It's not the extinct because of right now we also find out this frog. But dinosaur we are not find out right now. So how are these two words are different? Means what is the meaning? What is the difference between the extinct and endangered? Use the library, internet or other people who know about the animals to find the more information on extinct and endangered animals. One good source is so if you know the more animals who are the extinct and who are the endangered animals, so you are visit this website www.archive.org and so learn about at least one animal that is new to you so that you can say information about with your classmate. So you can use the internet and everyone use the internet, so you find out. Yeah, also you visit this also you visit this website and find out 5 animals there are extinct and 5 animals are there are endangered. आपको फाइंड करना है और यहाँ जो 5 बॉक्स दिया है उस 5 बॉक्स में आपको 5 एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट है वो लिखना है, जो एंडेंजर्ड है वो आपको लिखना है. Okay, so compare your list, your classmate list. Compare means you are not comparing, only you write down this one and also same copy in your notebook. आपको ये किसी और के साथ compare करना नहीं है. Because of what we say here कि compare your list to your classmate list. Compare means to look carefully at the list and yours to find out how the lists are the same of the different. यानी कंपेयर मैंने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना. सो राइट नाउ यू आर नॉट कंपेयर विथ योर क्लासमेट बिकॉज दिस इज द क्लास एक्टिविटी. So we are not complete this means you are not compare with another classmate. So only you write down 5 name of animal who are extinct and also you write down 5 animals who are endangered. आपको सिर्फ 5 animals का नाम लिखना है जो extinct है और जो endangered है वो आपको लिखना है. Okay, next activity 8. The purple frog is larger than many other frog, यानी कि दूसरे frog से ज़्यादा लंबा होता है. Who is purple? आपको ये पिक्चर में दिखाई देता है. It has a very fat body and short limbs and males are 60% smaller than females. The small hairs seem to the short of the body and the firm snout stick out in a small white nose. The purple frog has a shoe-shaped bump on each back leg and rounded toes on the wave feet for the digging. देखो जितना भी यहाँ बताया पूरे पिक्चर में आपको क्लियर because of in a coloring picture, so you easily understand about here in the activity 8 discuss about the body of the purple frog. कुछ के पार्ट कैसे होते हैं, वो कैसे जमीन को होता है कि मीन्स द पर्पल फ्रॉग हैज अ shoe-shaped bump on each back leg यानी कि पीछे वाले पैर पे and rounded toes on the webbed feet for the digging, यानी कि आगे वाला जो पैर वो राउंड है जिससे वो खड्डा खोलता है डिगिंग करता है. And the snout and legs help the frog dig in the ground for the insect, यानी कि अंदर से insect find करने के लिए वो help होता है. The smaller, clear, black eyes are above the narrow mouth, है ना, दिखाई देते हैं 2 eyes. The frog mouth is only the large enough to eat small insect like the termites. The frog favorite, यानी छोटे छोटे जो termites होती है, तीर जो छोटे छोटे होते हैं वो उनका favorite food होता है जिससे वो जमीन में से निकाल के खाते हैं. The small rounded tongue stick out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. The tongue has a round tip and the frog has no teeth, यानी कि यहाँ उसके दांत नहीं होते.
The tail is light brown with the dark brown patches. The smooth skin is dark purple on the back that fades to the grey on the belly. So here he discuss about the purple frog. Body इसकी body कैसे होती है, इसके पैर कैसे होते हैं, मुंह माउथ कैसा होता है, teeth नहीं होते, आंखों कहाँ होती है, कैसे उनका पैर, और everything discuss about in this activity 8, and you also observe the pictures and you can easily see now clearly. Activity 9. Okay, when the scientists discovered new animals and the plant, they describe them very carefully. यानी कि when the scientists start to find out, means discover, and whenever they are discover the new animals and new plant, the first of all they describe the very carefully. पहले उनके ऊपर वो स्टडी करते हैं, बाद में वो सबको डिस्क्राइब करते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंड वेरी वेल. विदाउट केयरफुल डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरी जानकारी बिना, टू स्मॉल और स्पाइसी मेड बी कंफ्यूज, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है. अगर कुछ फाइन उसने किया, डायरेक्ट कर दिया, और किसी सामने वाले ने पूछा कि ये क्या होता है, दे स्टार्ट द कंफ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द साइंटिस्ट डू, दे आर द हार्ड वर्क, मीन स्टडी ऑन दिस थिंग, एंड आफ्टर दे आर describe the carefully. So notice the carefully details in the description of the purple frog. यानी कि इन लोगों ने पहले purple frog फाइंड किया, उसके ऊपर स्टडी की, और बाद में बताया कि उनके टीथ नहीं होते, उनके जबड़ ऐसा होता है, लो जो ऐसा होता है, अपर जो ऐसा होता है, उनकी टेल ऐसी होती है, and how they are find the insect. So which part of the frog are carefully described. Activity 8 में हमें देखना है कि उनके कौन से पार्ट the scientists डिस्क्राइब द केयरफुली, तो आपको लिखना है कि व्हाट बिहेवियर आर डिस्क्राइब, उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो क्या काम करता है, वो आपको यहाँ लिखना है. अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव दैट यू आर द डिस्क्राइब द फ्रॉग. हाउ मेनी एडजेक्टिव डिड यू फाइंड, आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है. मीन्स गुजराती में बोलते हैं उसको विशेषण, वो गिवन द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. ओके, एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 10. A. Milne wrote the many poems for the children, and then he often wrote from the point of view child or the Jew. Is one of his poems written from the point of view of child? Children do not always know the right name of for things, and Milne interested. That is the delightful poem. What the poet said, A. Milne said, कि we all know कि small children did not know what is the real name of different animal. So here the poet also write not use the real words of the animals या real words of the what. यहाँ भी ये A. Milne ने ऐसी पोएम लिखी जिसमें उसने सही वर्ड्स लिखा नहीं है, उनके हिसाब से लिखा है कि छोटे बच्चे को सही नाम पता नहीं है, वो अपने आप से बोल देते हैं कुछ भी, राइट. तो यहाँ है पोएम उनकी कि देर आर लायंस एंड रोअरी टाइगर्स. हियर डिस्कस अबाउट द जू, एंड ऑलरेडी आई होप के सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विजिट द जू, एंड इन अ जू वी फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. कि देर आर लायंस एंड रोअरिंग टाइगर्स, एनॉर्मस कैमल्स एंड थिंग्स. देर आर बफेलो बिजान, है ना, बफेलो. Buffalo is not a real name, but buffalo is a real name. Means there are buffalo bisons, and a green big bear with wings. There are a sort of tiny potamus, है ना, or teeny potamus. Not the real name, use the hippopotamus. Mean here talk about a teeny potamus and a teeny nosers too. But I gave burns to the elephant when I went down to the zoo. यानी कि जब मैंने जू में डाउन हुआ तो मुझे एलिफेंट का बहुत सारा भाग दिखाई दिया. There are beggars and beggars and burgers in a supper in tenant's house. There are masses of goat and pollers. And a different kind of mouse. I think there is a sort of something which is called a wallabo. क्या बोलते हैं माउस को? के wallabo. And but I gave a burns to the elephant when I went down to the zoo. If you try to talk to the bison, he never quite understand. You can shake hand with a mingo. Means यहाँ mongoose की बात किया. He doesn't like the shaking hand. Here also mingo is not the real word, but mongoose is a real word. And a lion and roaring tigers, but having how do you do? But I give the buns to the elephant when I go down to the zoo. Okay, so now here we understand about, so what we do only in this activity, only you find out which word is not real and which word real, you write down in these two books. Okay, so this activity only you also copy in textbook. And how you write down the notebook,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन एक्टिविटी 10, यू राइट डाउन द होल पोएम, यानी कि पूरी पोएम लिखना है। उसके बाजू में कैसे दो बॉक्स किया है वो हमें नीचे 2 बॉक्स बनाना है, नॉट रियल एंड रियल। जो नॉट रियल में जो है एग्जाम्पल पोटेमस इज नॉट रियल, तो नॉट रियल के बॉक्स में आपको लिखना है पोटेमस। और कौन सा रियल वर्ड यूज किया है, कैलिफन, माउस, राइट, बियर, लायन, પછી buffalo means you write down only these words. So I hope whatever we learned today you understand very well. So inshallah next lesson we learn in our next video. Okay, if you are any confused so you ask me in the comment box, and also when you watch this video, after the video, under the video you write down your name and roll number in a comment box. Okay, so can I take your attendance? I hope you understand very well. Okay, Allah Hafiz.